Hello guys, my name is Ravi Singh and I'm a professional IELTS trainer with more than 15 years of experience. Do you want to get more than 7 band score and want to become permanent resident in one of the English countries such as Australia and Canada? Because most of the students feel helpless into how to get more than 7 band score because they are not able to fulfill the requirement of 7 band in each of the 4 modules in IELTS. So if you want to learn something new and very important and want to distinguish between the different levels in English, so stay with me until the end of this video. ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंड स्कोर तो ज़्यादा लेना चाहते हैं बट उनको डिफरेंट लेवल्स के बारे में कुछ नहीं पता कि 7 बैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, 8 बैंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है और 9 बैंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है. सो दिस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि 3 इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल, such as 6 to 6.5, 7 to 7.5, or 8 to 9 band score. Okay, so without wasting time, let's get down to work and discuss how to distinguish between 3 different levels. Okay, so look at your display. As you can see, we have the one essay title. This is many elderly people are no longer looked after by their families but are put in care homes or nursing homes. What are the advantages and disadvantages of this trend? And today we have one phenomenon. Means हमें एक issue दिया गया है कि बहुत सारे aged people को nursing home और aged care home में send कर दिया जाता है जब वो काफ़ी old हो जाते हैं. So हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है हमारे एग्जामिनर की तरफ से. वो इंस्ट्रक्शन है एक क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड. और ट्रेंड है कि एज पीपल को नर्सिंग होम और एज केयर होम में सेंड करना चाहिए या नहीं, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. और उसके लिए मैंने 3 इंट्रोडक्शंस आपके लिए लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स. सो एज यू कैन सी, फर्स्ट लेवल हमारे पास है जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन वर्जन 1. It is IELTS 6 or 6.5, and according to the CEFR it is B1 and B2, and CEFR for your information is Common European Framework Reference. Okay, अगर आप अपना IELTS का सर्टिफिकेट देखेंगे जहां आपके ओवरऑल IELTS बैंड स्कोर होते हैं उसके नेक्स्ट CEFR लेवल भी होता है जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं B1 B2, A1 A2, B1 B2 और C1 C2. B1 B2 stands for 6 to 6.5, C1 stands for 7 to 7.5, and C2 is the most professional or proficient level. Okay, and it stands for 8 to 9 band score. Okay, so you simply take care of IELTS band score. Okay, 6, 7, 7.5, or 8.5 or 9. Okay, so firstly we read introduction first. Okay, as you already know, इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, जैसे कि जनरल लाइन, मेन पार्ट और आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट. ओके, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर हमें ये जानना पड़ेगा कि वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या असेसमेंट मेथड है जो एग्जामिनर यूज़ करते हैं. ओके, सो लुक एट द डिस्प्ले. वी हैव 4 पैरामीटर्स. फर्स्टली इट्स कॉल्ड द ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, and this is GRA abbreviation. LR lexical sources. Okay, CNC cohesion and coherence, and TA and TR is task achievement and task response. बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते रहते हैं, एक सर्कल में फंसे हुए हैं, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि इनको डेवलप कैसे करना है, इन 4 मेथड्स को कैसे यूज़ करना है. जैसे कि ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी क्या होती है, वो सिंपल ग्रामर ही यूज़ करते रहते हैं और वो हमेशा वो 6, 5.5 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाते. ओके, लेक्सिकल सोर्सेज मीन्स वोकैबुलरी, कि आपकी रेंज कितनी है वोकैबुलरी की, आप ज़्यादा एडवांस वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं या नहीं, लेस कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हैं या नहीं. ओके, सो CNC cohesion and coherence, कि आपकी लैंग्वेज कितनी लिंक्ड है. मोस्ट ऑफ द essay must be logically linked. Okay, and your idea must also be arranged in logical manner. So otherwise your exam is going to have lots of struggle to follow your thoughts. Okay, so TA and TR, task achievement, task response means paragraphing, underline, and have you address the main
essay title or not. Okay, so these four methods are very important. Okay, this is assessment criteria. अगर आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे आपके बैंड स्कोर नहीं आएंगे. ओके, जितने ज़्यादा आप इनको डेवलप करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके बैंड स्कोर होंगे. जो सिंपल रूल है. सो इन दीज 3 इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताऊंगा कि इनको कैसे डेवलप करना है और उसमें डिफरेंस क्या होता है 6 से 6.5 में, 7 to 7.5 में और 8 to 9 में. ओके, so let's get down to work and we see our 3 introductions. Okay, firstly we read our first introduction. As most of the students write simple general lines such as they simply add technology. ये लाइन बहुत कॉमन है. Technology is increasing day by day, so people's lifestyle is also changing. This is the general line. In many countries, dwellers do not take care of the elders. That's why they send them in care homes, and other countries people care for their elders. This is quite simple. And next line is third line of the introduction is I am going to discuss some pros and cons of this trend in upcoming paragraph. ये इंट्रोडक्शन काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूशन में इस तरह की इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इसके आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट मिल सकते हैं. ओके, क्योंकि इसमें कभी मिस्टेक्स हैं, इसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेशन एडवांसमेंट नहीं है. जैसे कि टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग. ओके, दिस इज नॉट रेलिवेंट वर्ड्स, सिंपली punctuation mistake, comma with the dad. Okay, so there is no much logical link. Okay, because student who will write this kind of introduction such as 6 band score, these kind of introduction are not logically linked. इसमें ज़्यादा cohesion नहीं है. as मैंने बताया था, cohesion means chain of sentences, कि एक sentence से दूसरे sentence में आपने connective को use किया है या नहीं, वो इसमें ज़्यादा ऐड नहीं है. इसीलिए आपको 6 बैंड और CEFR के रिगार्डिंग आपको B1 और B2 बैंड्स को मिलेंगे. ओके, सो इफ वी go to version 2, this says IELTS 7 to 7.5 or CEFR C1 level. Okay, and this is very good attempt of the introduction. If you read now, with the advancement in technology and resultant prolonged life, many governments are struggling to manage their old generation. Now, this line is a bit sophisticated and advanced, and it is the extended version of our previous introduction, which is 6 band score. Look at that. Now, firstly, we use increase. Most of the students use increase with the technology when they want to refer to the technology is growing or developing. But relevant word is advancement. You can use noun or verb such as technology is advancing. But we have used advancement. And with we have used in order to make it simply as a result of something. Okay, such as with the advancement in technology, as a result of this, something has happened. And what has happened? People are living longer because there is a technology, advanced technology, medical facilities, medical care. So with the advancement in technology and resultant prolonged life, look at that. Now we have used resultant. Resultant means as a result of something. So we have used resultant as adjective with the prolonged life noun phrase. Okay, so this word resultant is linking that line with the first line. This was the cause, advancement in technology. टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और उसका रिजल्ट क्या हुआ? पीपल्स लाइफ इज बिकमिंग लॉन्गर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैनी गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर ओल्ड जनरेशन. कि बहुत सारी गवर्नमेंट जैसे कि वेस्टर्न गवर्नमेंट में कि काफ़ी ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट को स्ट्रगल करनी पड़ रही है कि ओल्ड जनरेशन को कैसे मैनेज करना है. ओके, ईस्ट केयर होम्स में. सो अभी हम पढ़ेंगे दूसरी लाइन इसकी. In many countries, old people are not looked after by their immediate family member, but rather sent to aged care homes. So, this is our main part of our essay. जैसे उन्होंने बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ में एज केयर को घर में नहीं केयर की जाती, उसको उनको एज केयर में सेंड कर दिया जाता है. सो सिमिलरली हमने इस लाइन को चेंज कर अपनी लैंग्वेज में लिखा है. To show some language or grammatical range. Just in many countries, old people are not looked after. But still there is some repetition, such as looked after,
and in the essay they have also used the looked after. So you should try to change the word. Okay, so it would be quite better to bring some flexibility in the grammar. So in many countries, old people are looked after by the immediate family member. So look at that, this is adjective in a family member, and this is quite advanced version of the introductions, the immediate family member, which are closely related to the aged people. Okay, and we have also used but rather, and rather is used for the contrast. Okay, so next sentence is quite different or in direct contrast with the लास्ट सेंटेंस. कि रादर हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमने कोई कंट्रास्ट दे रहे हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है हमारे प्रीवियस सेंटेंस से. ओके, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इमीडिएट फैमिली मेम्बर एज्ड केयर और एज्ड पीपल की केयर नहीं करते, बट रादर ऑन द कंट्रेरी ओके दे सेंड टू एज्ड केयर होम, कि वो एज्ड केयर पीपल को नर्सिंग होम में सेंड कर देते हैं. ओके, सो हमारी लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन की होती है जैसे कि आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट इन विच यू टेक पोजीशन. सो हियर वी हैव यूज्ड सिंपल फ्रेज दिस essay will discuss that trend of sending old people in nursing homes can free their children to focus on work as main advantage, but also increase burden on government, which is main disadvantage. So in the last line we have give our clear point of views to our examiner. हम अपने एग्जामिनर को 2 पॉइंट्स दे रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट पर बर्डन आएगा अगर एज्ड केयर में ज़्यादा रश होगा एज्ड पीपल का. ओके, ये काफ़ी डिसएडवांटेज है. और मेन एडवांटेज इसका क्या होगा, जो भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर होंगे वो काफ़ी फ्री हो जाएंगे, वो अपने विदाउट एनी इंटरवेंशन दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क्स. ओके, सो this is kind of introduction. It is an extended version, but still there are some mistakes, as this is a punctuation mistake. Our student has used comma with the that. Never use comma with the that, because that is definitive, demonstrative. Okay, so if you use comma with the that, it would be a comma supplying mistake. Okay, so never use comma with the that. If there is a which, then you can use comma. Okay, so this is a common mistake most of the students do. Never use comma with the that, I repeat. Okay, so and so if you compare this introduction, okay, introduction version 2 with introduction version 1, you will easily come to know what are the differences. This is the extended version. There are some more important words such as prolonged life, resultant. This is linking the this clause after the and with advancement in technology. ये 2 clause को आपस में लिंक किया जा रहा है and की वजह से, and ही coordinating conjunction होता है. ओके, सो जैसे कि governments are struggling to manage. These are some advanced words if you compare it with the 6 band score version. ओके, और हमने लिखा था जैसे कि हमने rather यूज़ किया. ओके, सो these are some words which make it something different, okay, to the next level. But JB introduction sound band, if we compare sound band with the 8 to 9 band score, then you will come to know that there is always the next level. Okay, so now we come to know how to write 8.5 or 9 band score introduction, and you will come to know the differences between these 3 introductions very easily. So now let's look at the third introduction. Okay, so first word we have used state-of-the-art technology. Oh, it's quite sophisticated word and less common. State-of-the-art technology is quite advanced. Okay, which is using the most recent technology in the industry. Okay, so this is called the state-of-the-art technology, and we have used extended the frontiers of the medical knowledge. Now we have added the medical information because aged people की life ज़्यादा long हो रही है, वो long हो रही है medical knowledge की वजह से, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, इसलिए हमारे एज पीपल वो ज़्यादा टाइम जी सकते हैं. ओके, सो हमने इसमें काफ़ी स्पेसिफाइड नॉलेज यूज़ की है फैक्चुअली. ओके, सो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हैज एक्सटेंडेड द फ्रंटियर. सो दिस इज द फ्रेज, एक्सटेंडेड द फ्रंटियर. So this is the phrase is quite advanced and less common. We use it when something's becoming quite advanced and our limits of knowledge are extending.
Okay, so our limits of knowledge are extending in particular domain. So here we have the domain medical knowledge. Okay, the meaning of the same. Technology is increasing with the advancement in technology, but here we have used state of the technology has extended the frontiers of medical knowledge. But this version is quite specified. We're directly using the medical knowledge. Okay, then we have used and thus. Okay, so thus mostly we use for the cohesion in order to link one sentence with another, and the simple definition is as a result of something. कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि मेडिकल नॉलेज के फ्रंटियर्स काफ़ी एक्सटेंड हो चुके हैं, इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है मेडिकल फील्ड में. सो दस का मीनिंग है कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है. इसका रिजल्ट जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन 7 में बताया था, रिजल्ट सेम है कि लाइफ वो ज़्यादा लॉन्गर हो रही है, जैसे कि हमने वर्जन 2 में बताया था prolonged life. Okay, this is also nice word, but here the most relevant word we have used life expectancy. Okay, so state of the art technology has extended the frontiers of medical knowledge and thus extended the life expectancy of the humans too. So this extend, this verb is simply have relation with the two direct object such as medical knowledge and thus the life expectancy of humans. Okay, so ये one verb, एक verb दो noun को describe कर रहा है, medical knowledge and life expectancy. These are simply noun phrases. Life expectancies कि लोग कितना लंबा समय वो जी रहे हैं इस टाइम में. Okay, इसको कहते हैं life expectancy or human longevity. Okay, so then we have used comma and we have used relative pronoun which. So which हम यूज़ करते हैं कि जो हमने क्लॉज पहले दिया हुआ है, जैसे जब पूरा सेंटेंस हमने लिखा हुआ है स्टेट ऑफ द आर्ट से लेकर टू तक, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम विच यूज़ करते हैं. जैसे विच विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, इसका काफ़ी अच्छा फ्रेज है. अगेन दिस इज एडवांस वर्जन. ओके, जैसे कि अनडाउटेडली, इंडिस्प्यूटेबली. ओके, सो विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट हैज़ offered. Okay, so this whole sentence such as advancement in the medical technology. So with the result of this, without a shadow of a doubt, ये क्या कर चुका है? Which without a shadow of doubt has offered favorable opportunities. Means favorable is adjective and opportunities are simply the chance opportunities. Okay, so favorable means which are quite acceptable and quite beneficial for us. So favorable opportunities to human to spend more time with their elders until their demise. Okay, so इसका क्या मीनिंग है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, मेडिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं. उसकी वजह से हमने यूज़ किया था उस 10. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूमंस की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस एक्सटेंड हो रही है. ओके, सो विच विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, उसका आगे रिजल्ट क्या हो रहा है? हैज़ ऑफर्ड फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ ह्यूमन, कि ह्यूमन के पास अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ कि वो अपने एल्डर के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं until their demise, and demise is a death, and demise is the formal word for the death, and we can use formal word in the essay. Okay, it will help you to get more band score. Okay, so then we have the next part, next line of the introduction. In some countries, however, now we have used however. It means our next sentence is in the contrast, means next sentence would be something different, as we have used rather. Okay, so in some countries, however, aged people's company is not being embraced generally, and rather they are abandoned in aged care homes as if they are unwelcome intruders. Okay, I told you कि जे इंट्रोडक्शन काफ़ी एडवांस है, इसमें बहुत ज़्यादा लेक्सिकल रेंज हमने यूज़ की हुई है, तो बहुत अच्छी ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी यूज़ की, इसलिए इसके 8.5 to 9 बैंड्स कराएंगे. ओके, सो in some countries, however, it means we are not sticking to the main phenomenon. Okay, so in some countries, aged people's company. Okay, aged people's company is not being embraced. Embrace means accepted. Okay, this is less common word for the accept. Is when you embrace something, when you accept something warmly, open-heartedly. Okay, we use embrace. Embrace is very simple word when you take hold somebody or something in your arms. Okay, so
however aged people's company is not being embraced, simply इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है एज पीपल को जेन्युइनली, ओके, ट्रूथफुली, क्योंकि जे एडवर्ब है, हम इसको यूज़ करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो बहुत जरूरी होते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ओके। एंड रादर मीन्स कंट्रास्ट, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उसके कंट्रास्ट कि उसके उल्ट क्या हो रहा है, उनको अबैंडन कर दिया जाता है, उनको सेंड कर दिया जाता है, डिजर्ट कर दिया जाता है, मीन्स सिंपली एज केयर होम्स में, ओके। अगर आगे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, जैसे एज इफ़ दे आर अनवेलकम ट्यूटर, जैसे कि बहुत सारे फैमिलीज, एडवांस फैमिलीज फील करते हैं कि हमारे एल्डर्स और एज्ड पीपल की कंपनी काफ़ी इंटरफ्रेंस कॉज करते हैं, ओके, वो इंटरफियर करते हैं, इसलिए हमने इंट्रूड यूज़ किया। इंट्रूड का मीनिंग होता है व्हेन एवर समबडी इंटेंशनली और समथिंग दे break your privacy, they attack on your privacy, okay, they breach your privacy, invade on your privacy। तो जब भी कोई आपकी प्राइवेसी को तोड़ता है, आपके पर्सनल अफेयर में दखल देता है, so at that time we can use intruder, okay। So simply they are simply aged people को कह रहे हैं unwelcome intruder, okay, as if they are unwelcome intruder, कि वो simply इसको वेलकम नहीं किया जाता, सिंपली हमारे इंटरव्यू करते हैं, इसलिए उनको एज केयर होम में भेज दिया जाता है बहुत सारी कंपनी में, बहुत सारी कंट्रीज में, ओके। सो आगे हमारी नेक्स्ट लाइन है, दिस इज क्वाइट सिंपल, दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस सम की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज एज, जैसे कि हमारे एग्जामिनर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वी कैन रिपीट इट, इट डज नॉट मैटर, ओके। सो दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस सम की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओल्ड पीपल्स एडमिशन। सो नाउ वी हैव यूज्ड समथिंग न्यू डिफरेंट, ओल्ड पीपल्स एडमिशन, वी हैव नॉट यूज्ड सेंड, ना ही हमने सेंड यूज़ किया, ना ही हमने और कोई अदर वर्ड यूज़ किया, हमने सिंपली यूज एडमिशन, ओके, बिकॉज जब भी आप एज्ड पीपल को वहाँ भेजते हैं उसकी सिंपली एडमिशन होती है, उनको आप एडमिट करवाते हैं, ओके। सो ओल्ड पीपल्स एडमिशन in geriatric, this is quite less common and this is new word for you, geriatric, relating to the older generation and with the reference to their health care, okay। This is a very relevant, strongly relevant word, collocative word, okay। Whenever there is an essay, nursing home, why the old people are being sent into nursing home or aged care homes, okay, so we can use geriatric health care centers, means old people are being sent in geriatric healthcare center. Geriatric means relating to old people and relating to their healthcare, okay। So now in this introduction, which is 8.5 to 9, जो आपको 8.5 to 9 बैंड स्कोर के लिए हेल्प करेगी, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रेंज और बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज़ की हुई, ओके। सो अगर आप ये तीन इंट्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे, आपको ईजली डिफरेंट लेवल्स के बारे में पता लगेगा, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कितना अच्छा एडजेक्टिव यूज़ किया, एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ मेडिकल नॉलेज, जब भी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है उसके लिए बहुत अच्छा फ्रेज यूज़ किया। पहले प्रोलॉन्ग लाइफ एक सिंपल वर्ड यूज़ किया गया था, अभी हमने यूज़ किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विच इज़ अ टेक्निकल वेरी रेलिवेंट वर्ड, एंड देन विदाउट अ शेयर ऑफ डाउट, दिस इज ऑल्सो द फ्रेज। सो ये सारे ही वर्ड इसमें जो यूज़ किए वो लेस कॉमन है। सो इससे हमारे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हमारी रिसर्च काफ़ी डीप है और हमारी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी बहुत हायर है, लेक्सिकल सोर्सेज बहुत हायर है, कोहेजन क्वेस मीन्स हमने काफ़ी ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स, कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ किए हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस को लिंक करने के लिए। सो हमारा एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जंप करने के लिए, ओके। जैसे इसमें हाउएवर यूज़ किया हमने, फ्रंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड यूज़ किए, ठीक है, until their demise, this says something, subordinating conjunction, okay। So rather, this is also linking word for the contrast, as if it is a condition. So we have shown the greater flexibility and diversity in the grammar in our final version of the introduction, okay। अगर आप इन तीन इंट्रोडक्शन अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको easily understanding हो जाएगी कि different levels क्या होते हैं। So my student, listen me very carefully. सर्कल से निकलने के लिए कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरी तरफ जाना है, दूसरी से तीसरी, इसकी कोई भी हेल्प नहीं होगी।
जब तक आप अपनी इंग्लिश को डेवलप नहीं करेंगे, ग्रामर को डेवलप नहीं करेंगे, लेक्सिकल सोर्स ऑफ वोकैबुलरी को डेवलप नहीं करेंगे, और अबव ऑल एल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिफरेंट लेवल्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है कि 6 की नॉलेज क्या है, 6 बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, 7 की क्या है, 8 की क्या है, सो बैंड स्कोर लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। और जब आप फॉरेन कंट्री जाएंगे, 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होगी, सो वहाँ और भी मुश्किलें हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो विजडम इसी में है कि आप एडवांस में प्लानिंग करें और एडवांस में ही अपनी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करें, ओके, सच ग्रामर को, वोकैबुलरी को और सोफिस्टिकेशन को, जैसे कि योर ऐसे मस्ट शो योर वर्ल्डली एक्सपीरियंस एंड facts, okay. So I hope you understand better how to write 3 different types of introduction for the same essay with the greater diversity and flexibility. अगर आप और इंग्लिश के बारे में और IELTS ट्रेनिंग वीडियोस के बारे में सीखना चाहते हैं और अगर आप अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते हैं कि मोर देन 7 बैंड्स को ले सकें, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and hit the bell button to receive notification for more advanced video tutorials on IELTS. Okay, so thank you.